Thank you so much. Yes, I have to live up to his theme, the floral garden. So I've come like completely dressed like a floral garden today. And Rohit always comes up with such innovative designs and such dramatic styling and everything. So his shows are always, and it's a pleasure to watch his shows, to be a part of his shows. And he's an amazing designer, and we all know he has such class, such style, and he's just too exquisite. I think this is going to be a great show. I'm really looking forward. And yeah, I hope I still match the theme of being flowery today. Thank you. Seema, come out. बुरी बातें बोल सकती हूँ in a Rohit Verma outfit. Well, I think I always look forward to Rohit's very creative, colorful, bright, vibrant collection, because I don't think he's ever done dull and boring clothes. He always does vibrant. And for some reason, whenever I get a Rohit outfit, it's always bright and very vibrant. And I love red, so I'm in this red outfit. And I look forward to this because I think we need to support India and made in India designers and make sure that they reach internationally and they do India proud. Thank you. Thank you. Are we asked to be seated or are we? Australia's Consul General here in Mumbai. This is my wife Francina. She's dressed by Rohit Verma today. You can see this amazing outfit, spectacular. It's been quite a treat getting dressed for this amazing event, which really showcases the best of India's fashion here in Mumbai. It's a vibrant city and it's a vibrant fashion scene, so we're very privileged to be part of it today. Thank you. वंडरफुल. रोहित इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, बहुत ही पुराना दोस्त है, फैमिली है और बहुत सालों से हमारा एक अच्छा घर का रिलेशन, फैमिली रिलेशन है. एंड आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी फॉर रोहित, all the hard work which he has done all his years, and I think he's a fantastic designer and very popular among the youth, and of course all ages. Rohit is for everyone, you know. So I think he rocks, and all the very best for him always. Welcome. Thank you. I had to be here for Rohit show because I have not been
able to attend his shows in the last 3 years, because fortunately every time he calls me I am busy shooting somewhere, and unfortunately or fortunately this time I was free and I came, and he's always been very lucky for me. He's always been there for me, and obviously I have to be there for my little brother, my little Rohit, and I wish him all the very best, and may he keep rocking, may he keep flourishing, may he keep glamorizing all of us, and I wish him all the very best. Chelsea coming back to 5 circles. आजो कम कम बिगेस्ट PR 20 साल से तो पूरा छापते हैं पूरे इंडिया में। कुछ बोलना है? Should I speak? Okay, so what do I do? कहाँ? Here? कुछ बोलना? Hi, I'm Ruby Bhatia, television presenter and happiness life coach. और मुझे बहुत खुशी हो रही है to be here at Rohit Verma's fashion show at Couture Week. This is the ultimate show. रोहित जी एक बहुत ही close friend हैं, बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं. I'm very thankful and honored to be here, and I wish him all the best, and I know he will rock. Love you, Rohit. मैं ये बोलूँगा इट्स अ ब्यूटीफुल वाइब एज यू कैन सी द पीपल अराउंड ब्यूटीफुल फेसेस अराउंड एंड सच अमेजिंग पीपल अराउंड सो इट्स अ ग्रेट वाइब टू बी हियर एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो एंड बस मैं च्युइंगम खा रहा हूँ इससे ज़्यादा बोलूँगा तो च्युइंगम बाहर ना आ जाए कहीं थैंक यू हाँ जी. I just want to congratulate to Rohit Verma, and this time I shot with him because he personally told me that you have to do this shoot for me, and actually it went well. So beautiful, super happy for him whenever he's doing something different and beautiful, and lots of wishes to him. Always good luck, Rohit, and this time again we're gonna enjoy, all of us. Thank you. Thank you. I think it's all very well organized, looking lovely, and I'm here to support my very, very dear friend Rohit Verma, who is so talented. I can't wait to see the show now. Thank you. Thank you. Yes, it's the same thing. And I'm super excited for this because it is all about Mystical Garden, and Rohit has really curated amazing stuff today. So I'm super excited for this too. Thank you so much. Looking forward. I can't hear you.
So we are very happy to be here to support Rohit Verma. He's an extremely talented designer and a dear friend. So we are here to watch his new collection and cheer him up. So all the best to Rohit and let's rock it tonight. And Rohit knows that I love florals, anything to do with flowers and gardens, my favorite theme. So I'm here to support Rohit and love him. Rohit is like a family. और आज तो कुछ ज़्यादा स्पेशल है because my daughter is walking for Rohit. So I'm very excited. Today is double excitement and बस हमेशा की तरह fashion show चल रहा है. You will see the people with a happy smile and good dresses. That is what happens in Rohit Verma show. Thank you. Excited to be here for Rohit always. He's worked very hard for every collection he does and I'm very proud of the fact that he's a friend of mine and I'm really looking forward to the collection he has. That's it. Thank you. I appreciate it. अरे मीडिया ले रहा है. Where's Parul? Where is Parul? Call Parul. So start, right? So hi. First off, thank you so much Rohit for gifting me so beautiful gift here and I'm wearing dress yours, Rohit Verma designer.
एंड आज का कलेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि हम लोग हर साल और हर शो में रोहित के आते हैं, न्यू फैब्रिक्स एंड न्यू एम्ब्रॉयडरिंग्स, न्यू कलर्स, समथिंग डिफरेंट जिसके अंदर वो जान डाल देता है, वो तो बहुत यूनिक होती है। एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी सरप्राइज टू सी दिस कलेक्शंस। अभी आज का क्या न्यू कलेक्शंस कमिंग, सो वो मैं देखना चाहती हूँ और आई एम वेरी हैप्पी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू रोहित वर्मा, थैंक यू। It's a wonderful show, and I'm looking forward that Rohit keeps doing wonders in life. He's a man on a mission, and the way he's taking things forward, there's no thing which can really take him on a back seat. He is a rock star, and I wish him all the very best in life. Thanks a million. दादा थैंक यू दादा। मेरे फैमिली मेम्बर है रोहित वर्मा, और मुझे लगता है उनके प्रोग्राम में हम नहीं पूरी इंडस्ट्री आती है, और बहुत बहुत बधाई उनको, शुभकामनाएं बहुत सारी। थैंक यू। भैया यहाँ से This is my first time for Rohit Verma show, and I'm really excited, really looking forward for it, and I hope कि मैं मतलब मिस हुआ है मेरा हर बार जब भी वो इनवाइट भेजते हैं और मैं नहीं आ पाती हूँ, बट दिस टाइम आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं
and I must say Rohit is really amazing with managing this socially thing. सबको एक साथ एक रखना रोहित को अच्छी तरह आता है एंड मेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसका शो देखने के लिए. इट्स एक्चुअली वेरी एक्साइटेड. आई एम जस्ट हैप्पी. थैंक यू. Coming, walking in, you'll see me. Yes, and now keep walking, I'll see you. I'm just where the interviews are being there. The next bar. अरे अंदर आएगी 10 लोग हेलो बोलेंगे. चलो. Come. आपको रोहित वर्मा के शो में आके कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा. हम हर साल आते हैं रोहित वर्मा के शो में और रोहित वर्मा और हमारी यारी बिग बॉस सीजन 3 में हुई थी और अब तक बरकरार है. नहीं, बीच में 9 साल बरकरार नहीं थी मेरी और उसकी. लेकिन उसके बाद भी मेट एंड बिग बॉस ऐसी एक जगह है जहाँ पे रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी हैं, बिगड़ते भी हैं. तो उसके बाद हम लोगों ने पैचअप किया और उस साल से लेके आज तक 4 साल हो गए हमने कभी मिस नहीं किया. एटलीस्ट मैंने कभी मिस नहीं किया. तनाज उससे पहले भी जाती थी. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि रोहित हर साल कोई ना कोई नया फैशन, कुछ नया लुक, कुछ ना कुछ लेकर ही आता है एंड वी ऑलवेज वेट फॉर इट. वो इतने जितने खुश मिजाज है उतने उनके स्टाइल्स भी है एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज lineup of clothes, his designs, and I just want to wish him all the very best and we are always going to be here for him. लेकिन ये इतने अतरंगी कपड़े जो ये फैशन शो में पहनते हैं और कब कोई पहन सकता है आम जिंदगी में, ये मेरा सवाल रोहित वर्मा से भी है. अदरवाइज जो उसके लास्ट ईयर के आउटफिट्स थे मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छे थे और वो कोई पहन सकता है. लेकिन आज मैं देखना चाहूँगा ये फैशन क्या है. लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि वाह यार रोहित कितने अच्छे कपड़े एंड सो ही से यार तुम ही लोग हो जो मुझे हल्के में ले रहे हो, मैं टैलेंटेड हूँ. ये तो हमारी आपस की फ्रेंडशिप है एंड लाइक आई रियली ऑलवेज विश हिम द बेस्ट. ऑल द बेस्ट रोहित, हैव अ गुड शो. यस. Very excited for Rohit's show, and Rohit show is always a celebration, so it's such a nice thing to come for him and meet everybody, and his collection is lovely as always, so we always look forward to his shows. Rohit's outfits are actually magical. He can dress anyone and he can make fairies to anybody. And today I'm wearing Rohit Verma outfit and this is how it looks. He can make anyone a beautiful lady.
we are associated, Vishesh Jewels, me Vaishali, is associated with Rohit as per jewelries, and we are soon coming up with our new showroom. Thank you. Thank you. This is my first time at JSCW, and I believe it's the 6th edition, and it keeps getting bigger and better, and the vibe here was super electric and was really, really enjoyable. So, I mean, it was great to be here. I love the theme of the show today. It was Mystical the Garden, and I feel very like garden chic in the florals that I'm wearing. And I saw the rest of the show as well from backstage, and it was very pretty, very like, fairy tale-ish and enchanting. And of course, I'm sure Rohit will add to that. About your collection? Well, I think she's already spoken so much. No, she I'm looks stunning so much. in my clothes, and she's a beautiful person. When I called her, she was always there, and we were doing this beautiful jewelry. And Satya Bhaiya being there, Bhaiya, please come that side. I've given him 100 calls, and he's been like my strength. Thank you each and everybody present over here, media, and of course the jewelry, of course my bags partner, Mehtab Bhai. Thank you everybody. Well, I went to some hanging garden, and I got this inspiration. I think I'm a creative person. Every time I come out of the box theme, so I thought, let's celebrate the garden, let's celebrate the woman, let's celebrate like femininity, and that's what like the idea came in my mind 3 months back. When JSCW approached me, I said, let's do Mystical Garden. I loved it. I loved the long ramp. It just felt, it was a little endless, but it felt really good. And I just feel like it's a great way for, each piece to tell its story, because you get to see it for longer, and it's just you're not rushing in and out. So I believe it was the longest ramp. I have to say something. When I went to Diana's house for the fittings, I happened to meet her mother. I think she's such an incredible and a beautiful woman. I get that vibe from her. She's so blessed to have a lovely mother like her. May Lord Krishna always bless both of them, and they'll rise and shine. Thank you. Thank you so much. It's a dream come true to work with Rohit Verma, and thank you Rohit for giving me this platform, this thing. Come on, anytime. And also Rohit makes us feel Alice in Wonderland with this mystical theme. It was incredible, and thank you everyone for joining us and being a support. Thank you. Thank you. Thank you. We just want picture together, huh? Yeah, come. Let Diana. Rakshit Bhaiya, please come here. Rakshit Bhaiya. Everyone here in my camera over here. Thank you. Come, Didi. Come. Everyone here in the center. Kalpit Bhai, आइए ना please. Thank you. One second. Where? IRTC वाला ये वाला? All team pack.
Thank you everyone. I'm Shakir Sheikh and I'm glad to be part of GICW. This is my third season associating with them. It's always been a pleasure because I think GICW produces some of the finest shows of production value in India. And we are glad here to be working on India's one of the longest runway, that is 140 feet, and models are going to have a tough time. But yes, we look forward because the first time GICW from Delhi has moved to Bombay, and they are not just doing it large, they're doing larger than life. So I'm sure you're going to enjoy every day the journey, the designers, every extravaganza with the models, with the celebrity showstopper. So I'm really looking forward to it. I think it's not difficulty, it's an experience, because I think we all are here for our experience, and people who are experienced, the best in the industry, are working here tonight. So we bring our experience to this amazing experience, and together we are creating the magic. What do we have to look forward to the next 4 days? Next 4 days, a lot of fashion, a lot of glamour, a lot of creativity, a lot of celebrities, a lot of showstoppers, and of course the glamour. Thank you, Shakir. Thank you. एक्चुअली बॉम्बे में इसलिए क्या है कि इस द बॉम्बे इज़ द बॉलीवुड हॉब, तो 6th रीज़न दैट्स व्हाई चूज़ बॉम्बे, बिकॉज मैं ग्लोबल में दिखाना चाहता हूँ, GICW का एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ. इज़ नॉट इन बॉम्बे, नेक्स्ट टाइम समथिंग आई विल गो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, आई विल बी प्रेजेंट माई GICW. और इसके साथ ही सिद्धार्थ, द फाउंडर ऑफ GICW, प्लीज़ आप भी हमें ज्वाइन कर लीजिए. सिद्धार्थ, so it's the 6th season, right? How it's going to be bigger and better than other seasons? See, every season has always been a step towards the progress, and every time we keep making sure that the growth is constant and steady. If you see and notice all our previous season, we have always ensured that we are one of the largest ramps and one of the best production in the country. And keeping that tradition alive, this year also we have a very big ramp, which I'm sure once you see all the shows you will see the difference. If you look at all the seasons and shows, you will see that our ramp that we have made this year is even larger than all our previous shows. और इस बारी जो है, जो हम लोग एक बहुत अमेजिंग चीज़ देख रहे हैं कि डिज़ाइनर्स और शो स्टॉपर्स बहुत अमेजिंग होने वाले हैं इस सीज़न में. What do you want to say about it? I'm crazy waiting for the show and watch whatever you go, you see. I want कि हम जब बॉम्बे में कर रहे हैं कि लोग देखे जाने कि हमारा जो GICW ब्रांड है, वो मैं भी चाहता हूँ कि सारे बॉलीवुड्स भी देखें, सारे सेलिब्रिटी भी देखें, सारे पैप्स देखें, कि ये ग्लोबल में थोड़ा सा हम हाइप करना चाहते हैं बॉम्बे के लिए. सिद्धार्थ, इस बारी और क्या क्या नया जो है वो देखने को मिलेगा 6th सीजन में? इन टर्म्स ऑफ नयापन, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नए नए डिज़ाइंस, नए नए डिज़ाइनर्स और नए नए कॉन्सेप्ट उतारें. तो हर शो में आप देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनर किस तरीके से अपने गारमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं. एक पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको. इनफैक्ट आज का जो कर्टन रेजर शो है उसमें भी आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारे जो डिज़ाइनर है वो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे अपने डेकोर, अपने शो, अपने म्यूज़िक और गारमेंट्स के प्रेजेंटेशन के द्वारा. Anything you guys want to ask? All right, thank you. मुंबई में GICW कितने सीजन लगे हैं, क्यों उतनी देर लगी? मुंबई इतने देर इसलिए लगा कि मुंबई ऐसा एक शहर है कि वहाँ पे चीज़ें को कोऑर्डिनेट करने के लिए टाइम लगेगा. आई एम फर्स्ट टाइम इन मुंबई
मुंबई को समझने के लिए, मुंबई की कल्चर को समझने के लिए, मुंबई को पब्लिक को समझने के लिए मुझे 4 साल लगे, क्योंकि मैं स्टडी करने के बाद मैं डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे में इस बार इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मुंबई के जो कल्चर है, जो फैशन इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उनको थ्रू जानना चाहता हूँ कि GICW को सब जाने। दैट्स वाई ये सीजन मैंने इसलिए बॉम्बे में चुना। मुंबई में बहुत वार्म वेलकम रहा आपका, यहाँ बहुत टॉप डिजाइनर शोकेसिंग, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डैम है। टेल अस व्हाट इज द USP ऑफ USP मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा इंटरनेशनल लुक देना चाहता हूँ GICW में। मेरा प्लेटफॉर्म जो है, मेरा रनवे जो है ऑलमोस्ट 160 फीट है, तो मैं जितना मेरे को बॉम्बे में जगह इतना लंबा चाहिए कि मेरा रैम्प भी 200 फीट चाहता हूँ कि मैं सबसे लॉन्गेस्ट रैम्प हो इंडिया का। मेरा प्रेजेंटेशन नहीं रहता है कि हमेशा हर सीजन मेरा रैम्प बढ़ता जाता है, तो दैट्स वाई बॉम्बे में इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे हाईएस्ट रैम्प मेरा बॉम्बे में करा है, वह दिस इज़ द 160 फीट। आई थिंक अगले 3 दिन में शो का जो वैल्यू है, जो डिज़ाइनर्स हैं, जो मोस्ट सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स है, जो पब्लिक्स है, कैसे उनका रिएक्शन आता है, क्या वो बात करते हैं। मुझे चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं मुंबई में कि ब्रांड को लेके क्या जानना चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर दैट कि लोगों में क्या कंप्लेंट्स है, क्या अच्छा है, क्या बुराई है, कैसे कर सकते हैं। आई वांट टू कि मैं उनको सुन के आगे वो चीज़ को इम्प्रूव करूँ। See, the basic USP is, like we said, this time all the designers are going to take you through a journey in terms of an experience. Rather than following a traditional fashion show where you just witness garments, you will get to witness an entire experience through not just the garment being showcased, but through a visual presentation, through a proper sound integration, through a proper prop integration. So there is an entire experience for every show that a guest would get to witness. कंट्री के इस बार तो हमारा कोरिया से एक डिज़ाइनर्स हैं, इंडिया के भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे कंट्री का ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जैसे आई हैव कंप्लीट 19 कंट्रीज़ ऑलरेडी जो इंडिया में आके पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो अभी भी हमारे पास 2 इंटरनेशनल है, क्योंकि मुझे इसको ग्लोबल पे लेके जाना है। तो मोस्टली मैं वेलकमिंग करता हूँ जो बाहर के लोग इंडिया से बाहर जाके शोकेस करते हैं, कि मैं चाहता हूँ लोग आके बाहर के लोग इंडिया के आके शोकेस करें और इंडिया में उनको प्लेटफॉर्म मिले ऐसा कि वो अपना डिज़ाइन शोकेस कर सकें। So in terms of participation, this year we have participants for Paris, we have participants from the Middle East, and the kind of garments that the guests can expect are very international. The whole idea is rather than witnessing what is available in our own country, we are trying to create a platform which becomes an epicenter for the entire world to come and showcase. So rather than having a brain drain where our designers are going to different countries and showcasing, we want the entire world to come to India and showcase. That's the whole idea about GICW. चीज़ 160 रैम्प रेल सेल्स वॉक करना इस चैलेंजिंग पर मॉडलिंग जो मॉडल्स भी वॉक करते हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि 160 रैम्प पे रेल सेल करना, शोकेस करना, वो इतना इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको अच्छा लगता है कि लंगा रैम्प पे चल के आने के लिए। तो मेरा विज़न यही है कि मॉडल्स को वॉक करते हुए उनको कोई ऐसा फील आए कि वो किसी रैम्प पे वॉक कर रहे हैं। मैं किसी शो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता या मैं कंपेयर नहीं करता, ये मेरा विज़न है। मैं किसी दूसरे शो को देखता नहीं हूँ, ना उन्हें फॉलो करता हूँ। मेरा एक विज़न है, मैं किसी ना कंप्यूटर देखता हूँ ना मैं किसी को ये करता हूँ।
हर इंसान का एक विज़न होता है, तो मेरा विज़न है मैं अपना तरीके से अपना ब्रांड को कैसे वर्ल्ड वाइज ले सकूँ. How different it will be like from other shows, मतलब basically what special डिफरेंट बिटवीन इस फास्ट डिफरेंट इज की इस प्लेटफॉर्म पे बाहर के जितने भी डिज़ाइनर्स है इंडिया से बाहर, जैसे वर्ल्ड के 19 कंट्रीज़ ऑलरेडी शोकेस कर चुके हैं इस पे. तो मेरा विज़न ये है कि इंडिया बाहर से वर्ल्ड से लोग आके इंडिया पे मेरे शो पे वर्क करे. मेरा नेक्स्ट सीजन विज़न ही यही है ग्लोबल इंडिया. मुंबई में स्पेशल क्या रहेगा सर? मुंबई में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लंबा रैंप रहेगा. हम सबको पता है कि किसी भी शो के ऑर्गेनाइजिंग में हमारे स्पॉन्सर्स, पार्टनर्स और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों का रोल होता है. तो उसी महत्व को इम्पोर्टेंस देते हुए मैं कुछ लोगों को आप सबके सामने थैंक यू बोलना चाहूँगा और उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा. फर्स्ट मिस्टर वसंत भंडारी. Thank you, sir. Thank you, GICW. This is a wonderful platform. On behalf of United Breweries, I congratulate Satya. I wish you all the best. Welcome to Mumbai. United Breweries always support you. I'll make sure. Thank you, sir. And this is a very big ramp which you said. Yes. Very nice. I wish you all the best. And anything in Mumbai, my moral support to you. Thank you, sir. Thank you. We also have Mr. Sabyasachi Satpathy, one of our participating designers. I would like to invite him. Thank you. The reason why I am calling Mr. Sabyasachi is for this season we have a very special and close to our heart presentation at our show, which we are dedicating to the state of Odisha, representing the culture and art forms and all the artisans community of Odisha, which Mr. Sabyasachi is curating himself. So I would request him to say a few words about that show. आप सबको बहुत दिनों बाद बिग बॉस की बात देखने के बाद, इतने दिनों के बाद आप सबको एक साथ देखे बहुत खुशी हो रही है. और मैं इस GICW का पार्ट हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ डिज़ाइन करना था. मुझे अपना देश का हैंडलूम, अपने ओडिशा का हैंडलूम, अपने जो होम ग्रोन चीज़ें हैं जो हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं वोकल फॉर लोकल, वो प्रूव करना था. तो मैं 2 शोज़ कर रहा हूँ इसमें, जिसमें कि ओडिशा का जो ट्रेडिशनल वीव्स हैं, जो ट्राइबल वीव्स हैं, उसे एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं. और दूसरा जो इंसान का पहला वीव था 30,000 साल पहले, उससे मैंने कुछ गारमेंट्स बनाए हैं, उसके ऊपर काम किया हुआ है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इंटरनेशनल ज़रूर हैं, इंटरनेशनली बहुत लोग आते हैं, डिज़ाइनर्स आते हैं यहाँ पे, हम देश के मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो हम दोनों को बैलेंस करते हैं. उसके बावजूद आपको सबसे लंबा रैंप देखने को मिलेगा और बहुत सारे वैरायटी के डिज़ाइंस और लोगों के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा. इसलिए हमेशा हमारे साथ रहिएगा. एंड ऑल द बेस्ट टू सत्या, सिद्धार्थ एंड यू, एवरीवन हु इज़ एसोसिएटेड. आज इतने हैं, कल इतने होंगे और दुनिया भर में हम फैलेंगे. थैंक यू. Definitely Mumbai. Yeah, after the show I'll be announced soon. The next season मुंबई में ही होगा. I'll be revealed very soon. Thank you. Thank you. Thank you, Vidya. All the best. Thank you so much. Thank you so everyone. Thank you. Support के लिए. My commitment to you. My commitment, sir. आपका commitment. Just one Thanks. picture. Pictures के लिए. But sir, हमें तो सर यहाँ पे आ जाइए. सर यहाँ पे आ जाइए. भाई एक मिनट रुक जाता. सर start from here. हाँ. Well, I've got butterflies in my stomach. I'm super duper excited. When I offered the show, I was not sure about it. But when I met Siddharth ji and Satyam ji, I found them very sweet and they convinced me that it will be of my standard.
I extremely thank my sponsors, Vishesh Jewelers, Rakshit Bhaiya and Vaishali Didi, and Exotic Bags, Mehta Bhai for supporting me, my friend Dipti for getting me the Twinkle Didi for doing incredible garden for me, my entire team, Paula Didi, you yourself for being my strength, and of course Anuradha, the girl Pooja from Canada, Miss Curve. And I'm thankful to everybody for being there, all the top models who just said in one phone call they were ready for me to be part of this fashion show. And I hope you will enjoy the show. And Incredible Garden has done a fantastic decor. My friend Somita, who's handled the guest list, I'm thankful. And each and every media present over there, because of you, I'm Rohit Verma today. Because of you, I'm here standing tall today. Thank you for being part of all my fashion shows and supporting me. 101 models to be models. Thank you. Bombay is buzzing because of my Kalpesh Bhaiya and Bhabhi, who has given me Divangi hoardings. You know, I always approach him and they always say yes to me for giving me billboards. And because of this, whole much promotions happened. And of course, I always sell a beautiful hamper which Exotic has given me, and it has created a buzz. Thank you. Yes. Diana is a sweetheart. When I offered her the show, she immediately said yes. And Manish has been family. Manish ने मेरे को बोला था उसको मेरे शो करना है. मैंने कहा भैया मैं आपको एक शो में बुलाऊंगी and it will be worth for you walking the ramp. So I can just do. This is a show where I've done justice to him. Looking forward to have you back here. Thank you very much. Yeah. Yes. Yes, but I'm also here primarily for Rohit Verma. वो इतने अच्छे गिफ्ट भेजता है हम लोगों को. Some of his stuff is for Rohit's show, because I can say that's a dream come true for me for Rohit's show, because I think 3 months ago I asked somebody that I wanted to wear Rohit's attire. How is it possible? So today I'm here and I'm just pinching myself. I'm very excited, and yes, I have a goosebumps right now that I'm gonna wear a design dress. So lovely, lovely. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you, Abhudi. Thank you, Anuradha, for coming for me on one phone call. You're a true inspiration to us, and thank you for representing my country. And you are the inspiration for many household good women who think that their life is done, and you are the one who is setting up the benchmark and example for everyone. Thank you so much. Thank you so today for this Global India Culture Week, and I've come for Rohit, especially Rohit Verma, and his work is always unique, very different, and he does a lot of effort he takes, when he's into it. So I'm
sure it's going to be really, really lovely.